आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन Set for the toss as Lall and Sethi take on Emerald Law offices. Tarun leading the Emerald Law offices and Raghav leading Lall आपके and पास दो Sethis ऑप्शंस हैं, with match या तो official सुपरमैन Mohammad Akram. बनकर I फर्नीचर would को भीगने request से बचा Tarun to लो, या flip the E3 coin. बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगा And Raghav leading Lall and Sethis with match official Mohammad Akram. I would request Tarun to flip the coin. I'll call. Heads. Heads is the call. It is tails. Raghav, you won the toss. Can you come over here? What's your choice? We will bat. And what's the reason behind batting first? I think we have not been too good at chasing, so we want to take a chance to give a good score on the board, and then maybe, bowl pretty well, and let's see how it goes. Can you justify that good score in figures? I would say we are looking something at about 180, something above 180. All the best for the game. Thank you. Tarun, now you've been asked to bowl first. You're happy with that, or you two were looking to bat first? Actually, we're happy with that. We don't mind bowling first and trying to restrict them to 150 maybe. That's our motto. All the best for the game. So the news from the center is that it is Lall and Sethi who's won the toss. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है दिल मिलते। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ है E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस, भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 First ball, and that's been put away into the offside. That's going to be a boundary. Good morning to everyone. Welcome to the 17th Self Turf T20 cricket tournament organized by Turf Sports Management. As we see both our on-field umpires out in the middle, Mohammad Akram and his partner Raj Gautam, with the official scorer Shiv Kumar. And what a wonderful start that is over here for Lall and Sethi as they begin the innings with the boundary. That's in the air, but it will be away from the fielder. And a single. Lucky for the batter that it didn't go to the fielder. Oh, that's in the air, but hasn't timed this one that well. Doesn't carry to the fielder at mid-on, and there was a chance of a run out, and the mid-on fielder
just missed out on getting that run out because he couldn't collect the ball cleanly. That was a chance gone down. Oh, another cracking shot. This time the fielder does well, just a single. Good comeback by the bowler. Oh no, that's a sloppy work from the bowler, letting the ball to go through. And because of that one run of overthrow, they pick up the second run over here. Sachit was bowling the first over here for his side. That's been played into the offside. There is a sweeper cover, will just be a single. Manish was batting on 1. Kapil was batting on 8. That's a good delivery. A defensive shot over there to finish the first over. It's 9 without loss. बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 Kapil into the attack now. Kapil from Lall and Sethi has been attacking very well with the bat. But now, Kapil from Emirate Law Office. Can he pick up wicket? Oh, he doesn't start that well. It's a wide down the leg side. They didn't start it that well in the first over, gave away 9 runs, and this over hasn't started that well. It's a wide down the leg side. Oh, just going past the outer edge. That's a good shot. Has he found the gap? Looks like he has. And that is going to be second boundary. Lovely bit of timing from Kapil. Just using the pace of the bowler and placing it into the gap for 4 runs. Kapil has been in a different mode today. He's striking the ball so well. His placement and timing has been so good till now. The way he's hitting the ball. Now he just wants to make slight change in the field. That's a width outside off stump, but that's gone straight to the fielder who was moved into that position before this ball towards that cover point region for no runs.
Missed out. Missed out. Should have gone towards the covers of over mid off, but trying to hit it over mid on. That is where he's missed out on hitting that one. That's missing everything. You could easily see the three stumps when the ball hit him on the pads. And that should be the end of the second over. Good over, just 4 runs from this one. 2 overs done. Score is 14 without loss. Sachit Mathur, who was expensive in his first over, gave away just 9 runs. Indeed, in the last of 5 runs came. 4 of the bat, 1 of extra. That was the wide of the first ball. That's a good delivery. Starting well, his second over on the target onto the off stump. Stepping out of the crease, hasn't timed this one that well. Straight to mid off, and first wicket goes down. Manish has to go back. Sachit striking into his second over after bowling an expensive first over. Quite easy catch for that mid off fielder. And Manish is disappointed with himself. The extra bit of bounce, getting higher onto the bat, and easily caught by the mid off fielder. This is how Manish got out, who came out of his crease, but an extra bit of bounce just undoing with him. And with that, he has to go back to the pavilion. 14 for 1. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन। In walks the team captain Raghav Malik. At the toss, he said that they would love to post somewhere around 170, 180 after getting a good start. They've lost the first wicket in the third over of this innings. Where is Raghav looking to go? Will it be through the offside? Will it be towards the onside? But the bowler bowls a poor delivery. That should be 5 runs of wides added to the total. The ball just slipping out of his hand. And that's not
Good delivery to a new batter. Easily given away 5 runs over here. Started this over so well with a wonderful delivery just around the off stump. Then using his shoulder, getting that extra bit of bounce, picking up a wicket of Manish. Raghav playing this into the offside quite easily for no runs. There is a slight dew. It's an early start. And winter is approaching, so you would see that in the early morning time there would be a little bit dew. That's why for the bowlers to grip the ball won't be that easy. But still credit to Chit the way he's bowled over here. 4 good deliveries on the target, just except that one ball which slipped out of his hand, went down the leg side for 5 runs of wides. Again, he goes down the leg side. The wicketkeeper couldn't collect the ball this time around. This time it won't be 5 runs of wides, but there will be 2 runs of wides added to the total. So till now, runs in this over have come only in form of wides. That was a very good shot from Kapil, but once again he finds that cover point fielder for no runs. He has been hitting the ball quite easily onto the offside. A couple of occasions he has not been able to find the gap. He goes big, but the stump goes for a walk. And that lets Kapil to take the walk towards the dugout. A good finish to the over with a wicket. Both the openers are back in the hut. This is how Kapil got out, looking for a big shot, missing the line of the ball, and the ball just cracking onto that off stump. So with that, 3 overs done, score is 21 for 2. E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है. E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा. New batter Mahendra Singh Rawat walking out in the middle. Now Mahendra and Raghav needs to get a good partnership over here. Kapil will continue. Wanted to work this one towards the onside. A shout for a leg before, but not out from the umpire. 1 run of a leg by. Over here, Lall and Sethi can't afford to lose another wicket. They've already lost 2 at the score of 21. With that 1 run of leg by, the score is now 22. They've got a good start, but they've lost 2 wickets. And they cannot afford to lose any more wickets over in the remaining overs of the power play. That's a good delivery from Kapil, forcing the batter to go deep into the crease and to play that defensive shot on the offside. That's just easily played towards that backward point for no runs.
Mahendra can afford to take his time. I wanted to run, but a good call from Mahendra, sending his captain back on time. Another good delivery, but equally well played by Mahendra towards the onside to pick up a single to get off the mark. A good tight over till now, just 2 runs from this over with 1 ball to go. Straight to that backward point fielder for no runs, so that should finish the 4th over. Just 2 runs from this over from Kapil. It's 23 with the loss of 2 wickets after 4. कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। थोड़ा आगे आगे, पीछे पीछे। Captain now into the attack, Tarun, and it starts very well, bowling on the target. That's in the air for a while, but that's in the gap. That should be a boundary for Mahendra. Looking for the Yorker. And he missed out the length, the line. Just a juicy full toss outside off stump. And Mahendra gets this one through that backward point region for 4 runs. That's been played away towards the onside quite easily by Mahendra. That's a sensible batting. Wanted to play somewhere else, but the ball of the inner part of the bat going towards the onside. That's in the air, but doesn't get to the mid-off fielder. Direct hit, the captain would have been in trouble. Good over from Tarun till now, except that 1 ball where he was hit for a boundary. That's a good delivery in the line of the stumps. So 5 overs done, score is 29 for 2. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं।
या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sachit was taken off the attack in the last over now. Back into the attack to bowl the last of the power play. His second over was really a good one. Oh, good delivery. Getting that outer edge. This one goes to that shot third man for no runs. Excellent Yorker. Very well bowled by Sachit. Getting it on the target. Started the over with a wide, but after that it's come back well. Captain playing this one off the back foot straight to that point. Fielder for no runs. Searching for the runs. After getting such a good start in the first two overs, 14 without loss. Oh, goes for that expensive drive. Just misses that outer edge. But after that, they've lost momentum. They've just scored 16 runs and they've lost 2 wickets. Using his feet, and he gets this one into the gap. Just beats that short third man for a boundary. First boundary for the captain. Beating that short third man for 4 runs. Gives room to himself. In the end, dropped. Short third man also tried his best, putting that dive in the last moment, but couldn't get to the ball. And a single will finish the power play. It's 35 for 2. This was that effort from that point fielder. And then the short third man also putting his effort over there. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग ना, चिड़िया वाला वॉलपेपर। चिड़िया वाला वॉलपेपर? ना 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 ना, मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके। नहीं, शादी वाला। नो नो ना। आपके पास 2 ऑप्शन। Here the power play is done. The 6 overs done. Score is 35 for 2. That's in the gap. That should be another boundary for the captain.
And with that, boundary score moves on to 39. Wanted to go through the offside to that cover region, but got the thickest outside edge and got towards a deep third man for a boundary. That's been played away quite easily towards a long on. Are they looking for the second run? No. Second run won't be possible. Will just be a single. Bowler couldn't stop that one, but there was a wicket keeper backing that ball. 5 runs of the first 2 balls of captain's over. That's well played. Into the offside by men. That both the batters are really batting sensibly over here. Not trying to take any kind of risk over here. And in between, they're getting those boundaries over here quite easily. Oh, good delivery. Just goes past the outer edge. Captain was looking for a big shot, but couldn't make any connection over there with the ball. Captain to captain. Just going past the outer edge. Fuller delivery. Captain goes down the track. And well done by the fielder in the deep. Will just be a single. It was a really good save over there. It looked like the ball might get to the fence, but well fielded by a long off fielder. So with that, 7 overs done. Score is 42 for 2. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Madhvan Srivatsan into the attack now. In the first 7 overs, they're going at 6 runs per over. They've lost 2 wickets, but they've got this partnership going on very well between these two, Captain Raghav and Mahendra. Have added 21 runs for this third wicket. They lost the second wicket at the score of 21. That's a good save from the bowler. That should be a wicket, but no, might have been a third umpire needed over here to make the decision,
because the on-field umpire Raj Gautam has referred this one to the third umpire. The third umpire to make the decision. This angle would be the perfect one for him to make the decision. Just wants to check whether he got back into the crease on time. Oh. Wants to check it again and again. Wants to be 100% sure before making the decision. And the third umpire's decision has come. It's not out. Just because the wicketkeeper took a little bit extra time in getting the ball close to the stumps and dislodging the bells that allowed the batter, captain, to get back in the crease. Good signs over here for Madhavan. As he has forced the batter to play a false shot, which just goes past the outer edge. Excellent bowling from Madhavan. Two good deliveries. Now with the third one also being so good. That's in the air, should be easy catch, and yes, gone. Soft dismissal. Captain has to go back. That pressure of dot balls was building on him, and he's handed an easy catch to that cover fielder. Sachit, the man who took 2 wickets and now takes a 1 catch in the field. So he's been quite busy with the ball and in the field. 42 for 3. New batter walking out in the middle, Manish Bisht. Excellent Yorker straight away to the new batter from Madhavan. What an over this has been till now from him. He hasn't conceded a run and he's picked up a 1 wicket of Captain Raghav. Finally a single, but that was a risky single. But they're looking to go back for the second. The throw comes at the keeper's end. And they will complete that second run quite easily. 2 runs and a wicket. Good one from Madhavan. 8 done. It is double 4 for 3. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड से की भेंट फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 That's a short delivery. There is a fielder in the deep. He really does well. Hitesh Tara into the attack for the first time. Almost took a stunning catch over there. Yeah, Manish Bish guessed alive over here.
That was a good attempt from the bowler to go for the catch. Maybe Mahendra has walked to his partner Manish Bish saying, "Calm down. Now we need a partnership." That's been played away towards the onside. Once again, Manish has called for the 2 runs, but this time around the fielder was too quick, charging onto the ball and making sure that the batter doesn't get that second run. Hasn't been struck that well, but he will pick up a single towards that long on region. Again, not timed that well, but a single is available for the batters to take over there. That's been hit straight to the field. A slight fumble allows the batters to complete that single. 9 done, score is 49 for 3. करते जिंदगी गुजार दो या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। 50 up over here. Lall and Sethi's team. There is a protection in the deep. He will just get a single. These two just dealing in those singles at the moment. Went for a big shot, hasn't got the timing right, but there is a fielder inside the circle. So no runs available over here. That's been struck to very well, but he's disappointed that after timing the ball so well, he's found that fielder and a wicket goes down. Mahendra can't believe it. That has been struck straight to the fielder. So time for drinks break over here. लेफ्ट राइट करेक्ट करेक्ट मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Seemed like it's going to be drinks break, but no, the umpire wants to continue this over, and maybe at the end of this over, they're going to call for the drinks break. A big shot for a leg before. Will the finger go up? No. It stays down. An eventful over this has been till now. From Madhavan. He's really bowled well till now. 2 wickets to his name. Trying to stop with his foot over there,
But the fielder in the deep does well, stopped with his foot. And 2 runs to finish the 10 overs. It is 53 for 4. Drinks break. हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। थोड़ा आगे आगे पीछे पीछे अरे उधर उधर किधर इधर उधर जल्दी नहीं हाँ नीचे लेफ्ट राइट करेक्ट करेक्ट मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग ना चिड़िया वाला वॉलपेपर? चिड़िया वाला वॉलपेपर ना 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 ना, मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके। नहीं, शादी वाला? नो नो। ना। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो एक दूसरे की नाक को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए। Play to resume after the drinks break. It is 53 for 4 in the first 10 overs with 10 more overs to go. Vinay batting on 2, his partner Manish Bish batting on 5. Madhavan has bowled really well till now. 2 overs, 6 for 4. Sorry, 2 wickets. In the first 10 overs, they've lost 4 wickets. 2 wickets to Madhavan, 2 wickets to Sanchit. Sorry, Sachit. That's in the air. There is a fielder, but it won't matter. That's gone out of the park. What a strike. Timing and placement was excellent to get it over the ropes for 6 runs. And after getting a 6, he picks up a single quite easily. That's a good strike. But there is a failure in the deep. Will just be a single. Oh, what a shot. Fielder tried his best to stop the ball from getting to the ropes, but that's going to be another boundary. Slight width outside off stump, and he crashed this one through the offside quite easily. Wonderful batting from Vinay. Ever since he's come out in the middle, he's batting with so much aggression. And this time he's played this one towards the fine leg. And this is racing towards the fence of 4 runs. Back-to-back boundaries over here.
Oh no, it's not off the glove. It's 5 wides to the total. That's in the air, but that's in the gap for another boundary to finish the over. An expensive over from Hitesh. 11 done, score is 74 for 4. This was just timing the ball over the covers for 4 runs to finish the over. दूध भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं, आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए। Single picked up over there. That will bring Vinay on strike, who's really batting so well with a lot of aggression and positive intent. Ever since he's walked out in the middle, runs are flowing quite easily. That was an excellent decision from the umpire. In the last over, the ball turned sharply and missed everything. In the real time, it looked like it might have come off the gloves or off the thigh pad, but that was excellent decision from Raj Gautam. And that should be a wide outside off stump. I've seen a sharp turn from this end till now. This time the batter just shuffling towards the offside and playing this one towards the fine leg. Will they pick up the third one? Yes, they will. Excellent bit of running between the wickets. Everyone applauds that running between the wickets over there from the dugout. Another expensive over. Catch is the call, but it's gone out of the hands of the bowler. Madhavan could have picked up his third one, but he himself becomes a culprit over here. The umpire just wants to check whether the bowler is okay. Looks like he's fine, not a serious injury to his fingers. That's wonderfully timed. And one bounce into the fence of 4 runs. Another wonderful strike from Vinay. He's made up his mind that he's going to go after the bowlers. Maybe Sachet is thinking that he needs to go back into the field now. They need him now. Picked up 2 wickets and a wonderful catch at covers. This man goes again after the bowler, but it will not carry to the field. It will land in no man's land. Will just be a single to finish that 12th over. It's 85 for 4. किधर उधर जल्दी नहीं हाँ नीचे लेफ्ट राइट करेक्ट करेक्ट
मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग। ना, चिड़िया वाला वॉलपेपर। चिड़िया वाला वॉलपेपर। ना मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके। नहीं, शादी वाला। नहीं। नो नो। नहीं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक दूसरे की ना Karan Minocha now into the attack. It really starts well. The ball just goes past the outer edge of Vinay. What a knock this man has played till now. 23 of 11 balls. And has got the gap once again. He swept this one towards a long leg for 4 runs. Impressive and aggressive batting from Vinay. He's playing fearless cricket over here. He's not bothered with those fall of 4 wickets. He just wants to play shots. Another boundary to his name. He's moved on to 27. He's dragged this one from outside the off stump. There is a protection in the deep. Will just be a single. Lall and Sethi. This team has got a depth in the batting lineup. With that single, Manish Bisht on strike now. Manish is looking to hit with a lot of power. Maybe he should just focus on picking up those singles. Let Vinay do that job of hitting those big shots. Wasn't full confidence. Should he play the shot or should he not? He thought the ball might just go down the leg side. Was in two minds. Good finish to the over with couple of dot balls. 13 done. Score is 90 for 4. या तो एक दूसरे की ना को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Tarun, the captain, brings himself back into the attack and taken on a rebound. Vinay thought that the ball might just pop out of his hand, but on the rebound, the fielder takes the catch and captain picks up a big one over here. The man who was looking dangerous, Vinay has to go back. Hit hard, but straight to that cover point fielder. Half of the team is back in the hut now. This is how Vinay got out. On the second attempt, the catch was taken, but he's really entertained everyone. That was an entertaining knock from him. He's a little bit disappointed with himself that he couldn't put this one into the gap. 90 for 5.
किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है। That's been hit back to the bowler by Karanveer. New batter, Tarun, who brought himself back into the attack and straight away picked up a wicket. That's been played straight to the backward point for no runs. Hitting this one down the ground. There is a protection in the deep. Will just be an easy single. So Karanveer gets off the mark with a single. That's been hit into the offside by Manish for an easy single. That's been hit into that deep onto the offside, but well done by the fielder. Driven well through that cover region to pick up 2 runs over there. "14 overs are done. Score is 94 for 5. Good over from Captain Tarun, picking up a wicket, getting rid of dangerous Vinay. That's gone in the air. And fielder settles underneath this one, takes the catch. Number 6 goes down with that. Manish Bisht has to go back. "94 for 6 now. This is how Manish got out, trying to go for that big shot. And a good running catch over there by that long on fielder. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग ना, चिड़िया वाला वॉलपेपर। चिड़िया वाला वॉलपेपर। ना ना ना। Raghav. Another batter was walked out in the middle. They've got 2 Raghav and 2 Manish. One of the Raghav is the captain.
Yes, no, and the fielder was a little bit lazy that allowed the batters to complete the single. "95 for 6. That's just played off the back foot. Captain Raghav is telling Vijay that you got a good start. You should have got a big one today for us. That's been hit along the carpet towards the long off to pick up a single. The over started with a wicket. Another good over from Karan. This was how they picked up that single. The cap keeper was really smart and he's saying, "What are you doing this? You needed to throw a little bit quick." Final ball of the 15th over, 96 for 6. Stopped with his foot over there, and that should end the 15th over. It is 96 for 6. Into the offside, straight to the fielder for no runs. That's gone straight to the backward point fielder. Good call from his partner, Karan Veer, not to go for. New batter Yatharth Khurana walking out in the center. Another quality delivery. This has been excellent bowling from the captain Tarun. That was a good delivery. Batter looking for a big shot, just getting extra bit of bounce over here, Captain Tarun. That's gone towards his shot. Fine leg, and that should be a dot ball. Sorry, single.
That brings Yatharth on strike. He's played this one towards that square leg fielder. Would have been a chance if he would have collected the ball cleanly. That's been played towards the onside. Just a single. So that should be the end of 18th over. It's 110 for 7. ये अपना जहां है दिल मिल E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग। ना चिड़िया वाला वॉलपेपर। चिड़िया वाला वॉलपेपर। ना मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके। नहीं, शादी वाला। नहीं। Karan, who's picked up 2 wickets still now into his last over. He starts his last over with the 2 runs. Both the batters trying their best to get the team to 130, 135. Oh, extra bit of bounce. Turn with that bounce. Just makes it difficult for the batter to play the shot. That is in the air, but that's going to fall in no man's land and it will be just a single. Wanted to play this one towards the onside just because of that turn, a leading edge. Lucky not getting to any of the fielder. He will pick up a single over there quite easily of a bye. Every run is important at this stage. Was thinking to come down the track, then he saw the bowler has dragged the length, so went deep into the crease and he's put this one into the offside for an easy single. Extra bit of bounce. Hesitation in the mind of the non-striker to go for the single. There was single easily available. And finally, they complete that run. 19 done. Score is 116 for 7. पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है दिल मिल E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग। ना चिड़िया वाला वॉलपेपर। चिड़िया वाला वॉलपेपर। ना मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके। नहीं, शादी वाला। नहीं। नो नो। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो एक दूसरे की नाक को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। Final over of this innings, 116 for 7. And Madhavan is going to bowl the last over of this innings. He doesn't start that well. It's a wide down the leg side. You can't bowl over there when you don't have protection at fine leg. That's a better line. That's a better length.
The batter playing a defensive shot, not going for any big shot. That's the second wide in the over. This time around outside off stump. Wide dot, wide dot. That is how this over has gone till now. And finally runs off the bat in this over. $119 for 7 with 3 more balls to go in this innings. Innovative shot over here from Karanveer. And they run really well between the wickets. Both the batters Karanveer and Yatharth. 2 runs completed quite easily. That was good thinking from Karanveer to play that innovative shot when the runs aren't coming that easily onto the offside or on the onside in front of the wickets. Walking down the track, getting on the pads for no runs with 1 ball to go in this innings. 121 for 7. That's gone in the air and dropped. Chance of a run out. Should be easily done by the wicketkeeper. So with that, Lall and Sethi in 20 overs have got to 122 for 8. 123 is the target over here for Emirate Law Office. It's time to watch the highlight of the first innings, and then we'll dive into a short break and we'll come back with the run chase. Thank you. आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है। फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है। फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की।
First ball, and that's been put away into the offside. That's in the air, but hasn't timed this one that well. Doesn't care to the fielder. That's a good shot. Has he found the gap? Looks like he has, and that is good. Stepping out of the crease, hasn't timed this one that well. Straight to mid. But the bowler bowls a poor delivery. That should be fine. But the bowler bowls a poor delivery. That should be fine. He goes big. But the stump goes for a walk. And that lets Kapil to take the... That's in the air for a while, but that's in the gap. That should be... Using his feet. And he gets this one into the gap. Just beats that short third man for a boundary. Gives room to himself in the end, dropped. 35-2. That's in the gap. That should be another boundary for the captain. Fuller delivery. Captain goes down the track. And well done. That should be a wicket. That's in the air. Should be easy catch. And yes, gone. Soft dismissal. Almost took a stunning catch over there. That's been struck to very well. This over, and maybe at the end of this over, they're going to call for the drinks break. A big shot. That's in the air. There is a fielder, but it won't matter. That's gone. Oh, what a shot. Fielder too much aggression. And this time he's played this one towards the fine leg. And this is racing towards the fence of 4 runs. That's in the air. But that's in the gap. Another expensive over. Catch is the call. That's wonderfully timed. And one. And has got the gap once again. He swept this one towards. Tarun, the captain, brings himself back into the attack and taken on a rebound. Vinay thought. That's gone in the air and dropped. Chance of a run out. First ball, and that's been put away into the offside. That's got. Oh, that's in the air, but hasn't timed this one that well. Doesn't care to the fielder. That's a good shot. Has he found the gap? Looks like he has. And that is good. Stepping out of the crease. Hasn't timed this one that well. Straight to mid. But the bowler bowls a poor delivery.
That should be fine. But the bowler bowls a poor delivery. That should be fine. He goes big. But the stump goes for a walk. And that lets Kapil to take the... That's in the air for a while, but that's in the gap. That should be... Using his feet. And he gets this one into the gap. Just beats that short third man for a boundary. Gives room to himself in the end, dropped. 35-2. That's in the gap. That should be another boundary for the captain. Fuller delivery. Captain goes down the track. And well done. That should be a wicket. That's in the air. Should be easy catch. And yes, gone. Soft dismissal. Almost took a stunning catch over there. That's been struck to very well. This over, and maybe at the end of this over, they're going to call for the drinks break. A big shot. That's in the air. There is a fielder, but it won't matter. That's gone. Oh, what a shot. Fielder too much aggression. And this time he's played this one towards the fine leg. And this is racing towards the fence of 4 runs. That's in the air. But that's in the gap. Another expensive over. Catch is the call. That's wonderfully timed. And one. And has got the gap once again. He swept this one towards. Tarun, the captain, brings himself back into the attack and taken on a rebound. Vinay thought. That's gone in the air and dropped. Chance of a run out. First ball, and that's been put away into the offside. That's जिम्मेदारी तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है पानी और दीमक के असर से भी बचाता है E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर बहुत फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो यहाँ प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखो E3 प्रोडक्ट्स अलग अलग रिश्ता लंबा चलेगा साथ में रहना सीख जाते हैं आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं क्या बात है जनाब आज किचन में सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं E3 मॉड्यूलर किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता आपके पास 2 ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो ओके थोड़ा आगे आगे पीछे पीछे उधर उधर किधर उधर नहीं हाँ पीछे E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा मिल गया आपके पास 2 ऑप्शंस हैं
या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। हेलो Welcome back for the run chase. 1, 2, 3 is the target over here for Emerald Law Office. And Madhwan, who really bowled well, is opening the innings with Hitesh Tara. Manish starts well with the dot ball just outside off stump, where Madhwan going for that expensive shot. That should be first runs on the board, just outside off stump, but too wide and away from the batter. In the air and dropped. That should have been taken over there. Quite easy catch for that cover point fielder, but he's put this one down. He's really disappointed with himself. This was an easy catch. And the next ball, it's a cracking shot over extra cover for 4 runs. Oh no, it's gone all the way over maximum. What a shot. This is from Madhavan. Timing, placement, excellent. And the ball travels all the way for 6. In the air, fielder is there at deep backward point. Will just be a single. The catch gone down. And after that, Madhwan has looked a different batter. Played back to the bowler for no runs with 1 more ball to go in this over. They've got 8 on the board. That's been played into the offside. Straight to the fielder for no runs to finish the first over. It's 8 without loss. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है, फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो, या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है। पानी और दीमक
That's just been played into the offside, straight to that cover point for no runs. Spin into the attack, Kapil. That's been pushed into the offside, slight to misfield, going for a quick single, and they get that run quite easily. There was a slight hesitation to go for the run, but lucky, no damage. Oh, that's off the outer edge. This might get to the fence at deep third man for 4 runs. Lucky runs. Just gets that outer edge at the last moment and fetches the boundary to get off the mark. Not a confident shot, but he'll take that boundary. That's a confident shot, but that's in the hands of the fielder. First wicket goes down. He couldn't generate the power to clear that fielder at mid wicket. Straight into his hands, and first wicket goes down. Hitesh has to go back, looking for a big shot, but not able to clear the fielder. फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। थोड़ा आगे आगे, पीछे पीछे, अरे उधर उधर किधर किधर उधर जल्दी, हाँ नीचे, लेफ्ट राइट, करेक्ट करेक्ट। Final ball of this over. A successful over for Kapil. He's picked up 1 wicket. A shout for a leg before. He was jumping and begging from the umpire, but the umpire said it's not out. So that should finish the second over. A successful over from Kapil. 2 done. It is 13 for 1. Captain Tarun leaving dangerous past the ball over 4 runs. Timing and placement excellent. This time he gets towards that mid-off fielder for no runs. Looks like that mid-off fielder is injured. The ball has hit him on the knee roll. On the knee indeed. That was really struck with a lot of power.
Not able to find the gap. Fielder wasn't expecting the ball to come towards him at that pace. Hitting him on the knee. Substitute fielder just gets in now. So with that, 3 overs are done. Score is 18 for 1. सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। थोड़ा आगे आगे पीछे पीछे अरे उधर उधर किधर उधर जल्दी हाँ नीचे लेफ्ट राइट करेक्ट करेक्ट मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Kapil will continue, who picked up 1 wicket in his first over. Just played away towards the onside by Madhavan to pick up a single. Not a huge target to chase down, but Lall and Sethi have started well with a wicket. Long stride forward and pushing this one towards the mid-on for no runs. Captain has looked quite confident in the kind of shots he's played till now. Just wants to make a change to the field. That's played away towards the onside. A lot of work to be done by that fielder in the deep. Well done from Vinay, and 2 runs taken over there quite easily. Oh, is there a bat involved? No, it's off the pads. 4 runs of a leg by. And the batting team will take that. Whether it's a leg by or off the bat, it doesn't matter. They'll take those runs. This time, is there anything involved? Or it is going to be 5 wides? Yes, it is 5 wides to the total. Runs added over here. The batter missing out on hitting that one to the fence for a 6 or a 4, but they get handsome amount of runs over here. A wide which went for 4. So 5 runs of wides will be added to the total. And quicker delivery just outside off stump. That's where he needs to bowl Kapil. Last 2 balls were down the leg side. Well played. Solidly played back to the bowler. 4 overs done. Score is 30 for 1.
आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है, फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 Oh, what a shot! Sweetly struck through the offside. Exquisite timing and placement over here from Madhwan to pick up another boundary to his name. That was really traveling like a tracer bullet to the fence. Clever cricket from him. He wanted to steal that single, but good awareness by that cover point fielder, not letting the batters to go for that single. Quickly charged onto the ball. He's hit this one in the air. There is a protection this time around on the offside. They've got deep extra cover. Move that sweeper cover into that deep extra cover region. Just a single. Captain goes big. He's played this one along the carpet, but the fielder at deep extra cover can't get there. Another boundary in the over. Wonderful batting from both the batters. First Madhwan getting a boundary. Now it's Captain Tarun getting a boundary. Well played, Captain. Timing and placement was so good. And he picks up his another boundary in the over. Back-to-back boundary for the captain. Superb timing and placement. Just beating that short third man to fetch another boundary. He's played this one towards the onside. Are they looking for the second run? Yes, they will go back for the second and will complete that run quite easily. 5 overs are done with one more to go of the power play. It is 45 for 1. फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है। Kapil will continue. Two overs, 13 for 1. First over was a wonderful over from him. Last over was a little bit expensive. But Captain Raghav still showing a lot of trust on him. And that's a wide down the leg side. He bowled a couple of deliveries down the leg side in the last over.
And he starts with the wide down the leg side. Shot outside off stump, cut away, but straight to that backward point for no runs. Madhavan is searching for another boundary. He's really timed this one very well, sweetly into the offside. He will just get a single because sweeper cover is present over there in the deep. Short delivery, but he couldn't find the gap, hitting this one straight to long off for a single. Captain might be disappointed that he couldn't put that ball away. Played away towards the onside. Lot of work to be done by that short fine leg fielder. And before he returns the ball to the wicketkeeper, 2 runs completed. That brings up the 50 over here of Emirate Law Office's team. Struck down the ground towards long off. Another single. They're going out at 8.74 runs per over. The required run rate is below 6 runs per over. Captain goes hard down the ground. Lot of work to be done by that long off fielder. Really does well. Saves couple of runs for his team. Once again, it's Winnie who does well. So the power play is done and dusted. It is 52 for 1. प्रेम करके नहीं शादी वाला नहीं नो नो नहीं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक दूसरे की नाक को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है, फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो या वो जैकेट हो। Change in bowling as Manish Bisht comes into the attack. Captain Tarun batting on 18 and Madhavan batting on 19. The power play is done, so they can now spread the field. They can have 5 fielders outside the ring. They've got a sweeper cover, long on, long off, deep mid wicket.
and deep square leg. So this is the field placement outside the circle. And he doesn't start that well. It's a wide down the leg side. This has been the problem with most of the bowlers of Lall and Sethi's team. They bowl down the leg side, too many deliveries or too many fuller deliveries or just short and outside off stump. Again shot. A little bit onto the leg stump, put away onto the onside by captain, but well done by the fielder. Just a single. Oh, that's gone miles in the air. And that is going into the dugout for 6 runs. What a shot from Madhavan. Lovely batting from this man. His timing has been so good. Just got it from the sweet part of the bat. And the moment he stroked this one, he knew this is going all the way for 6. Shot outside off stump. Straight into the hands of the sweeper cover and out of his hands. Second life for this man. He was dropped on 0 and now he's been again dropped on 25. This time captain looking for a big shot but just pushing this one towards the long on for a single. Slower delivery. He's timed this one very well and Vinay almost looked like he's made a mistake but he recovers well. Oh no, it's a no ball. Free hit signal comes from the umpire. Captain has got the license to go after the bowler. Too short and put away into the onside. No chance for anyone. Wonderful striking from the captain. That's another boundary to his name. We've already seen a 6 in this over. Now a boundary of a short delivery. Captain putting this one towards the mid wicket quite easily for 4 runs. He goes down the ground. Lot of work to be done by that long on fielder. He really does well, stopping the ball before the ropes. Just a single. 7 overs done. Scored is 69 for 1. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल। कितने रन आए ओवर में? कितने चाहिए थे? अब
सही है ना? वो ऐप में कोई एरर होगा, सिंक लेट हुआ वो सर्वर। The ball just holding into the surface and played towards the onside for no runs. Winnie into his second over. That's been hit with a lot of power, but gets to that long off fielder on a couple of bounces for a single. Madhwan on strike now. He's batting on 27 with 2 lives to his name. Dropped on duck, then dropped on 25. He was looking for that big shot, but then saw that this wasn't the length and the line where he can go for a big shot. Played a defensive shot. Going for a big shot, but that's a wide down the leg side. And shout for a leg before. Not out, says the umpire. He's played this one so well, but once again he finds the fielder in the deep on the offside. Will just be a single. Captain rocks back, but couldn't find the gap. Hit this one back to the bowler. A good tight over from Vinay. So after 8, score is 72 for 1. भाई 73 होने चाहिए ना स्कोर में। 3 सिंगल और 1 वाइड, 3 सिंगल और 1 वाइड, कैसे 2 आए? पहला सिंगल विनय ने लिया, फिर माधवन ने सिंगल लिया, फिर वाइड गई, फिर वापस लास्ट बॉल पे वो तरुण, अच्छा डॉट हुआ क्या लास्ट बॉल? मुझे लगा वो सिंगल लिया है। मैं सबसे पहले स्ट्राइक करता हूं, फिर मेरी स्ट्राइक इधर उधर खुद ही पता चल जाता है। हाथ में गई थी लास्ट बॉल, सही। That's pushed quite easily into the offside at long off for an easy single. That will bring Captain Tarun on strike now. Tarun on 26, Madhavan on 29. They've got to 73 in no time. Just 50 more runs needed for a victory of 71 balls. He's flicked this one quite easily towards the square leg for 4 runs. Wonderful striking from the captain. He's not missing out on the loose balls. A full toss delivery on his pads. And he's played this one quite easily for 4 runs. That should be just a single. Oh no, it's misfield. But there is a fielder in the deep, so just a single. That's a single. With that single, score moves on to 79 for 1.
Tarun looks like he's found the gap. That's going to be another boundary. Didn't time that well, but the placement was so good. And once you get in the gap, this outfield is very quick. Good timing over there. There is a fielder in the deep at long off, so a single should end the over number 9. And after 9, it is 84 for 1. Manish back into the tag, 2 overs, 13. He hasn't gone for too many runs. Still not sure which field he needs to have. Slower delivery. And has put this one towards the onside quite easily for 4 runs. There was no one at deep mid wicket. And he picked that slower delivery and he slogged this one for 4 runs into that deep ना mid wicket चिड़िया वाला वॉलपेपर Now they're bringing that deep third man inside the circle and pushing that short mid wicket into the deep. Oh, missed out. But they don't miss out on taking the run. 1 run of a bye. Captain would be disappointed with himself that this was there to be hit for a 4 or a 6. Sweet sound of the bat, but he'll just fetch a single over here. There was an appeal for a run out, but the batter was well inside the crease. After brushing his shoe, the ball went onto the stumps, but the non-striker, Madhwan, was well inside the crease, and they pick up a single. The batter wasn't ready because there was some movement when he was still moving, trying to get into his position at long off. Slower delivery, that was chance. But these kind of catches just get struck in the hands. They can't be taken. A good bowling from Manish. He's come back well after getting hit for a boundary of the first ball. He's continuously using those off cutters over here, just taking the pace off from the ball.
And that's in the gap. Well struck by the captain before runs. A juicy full toss. Timing and the placement was so good. The over started with a boundary. The over ends with a boundary. 10 done. It is 96 for 1. नैना मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके नहीं, शादी वाला। नहीं नो नो। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो एक दूसरे की नाक को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है। फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो, या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। थोड़ा आगे आगे, पीछे पीछे, अरे उधर उधर किधर किधर उधर जल्दी नहीं। हाँ नीचे, लेफ्ट राइट, करेक्ट करेक्ट। मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग ना, चिड़िया वाला वॉलपेपर। चिड़िया वाला वॉलपेपर। नैना मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके नहीं, शादी वाला। नहीं नो नो। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो एक दूसरे की नाक को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है। फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट हो, या वो जैकेट हो जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। E3 HDMR बोर्ड समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहां प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है।
अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या बात है जनाब, आज किचन में? सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं। E3 मॉड्यूलर किचन के कोने कोने को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। थोड़ा आगे आगे, पीछे पीछे, अरे उधर उधर किधर किधर उधर जल्दी नहीं, हाँ नीचे, लेफ्ट राइट, करेक्ट करेक्ट। मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। ये अपना जहां है, दिल मिलते E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। एक दीवार तो हाईलाइट होनी ही चाहिए। घोड़े वाली पेंटिंग। ना, चिड़िया वाला वॉलपेपर? चिड़िया वाला वॉलपेपर? नहीं मेरे अवार्ड्स फ्रेम करके। नहीं, शादी वाला? नहीं नो नो। नहीं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक दूसरे की नाक को हाईलाइट करते करते जिंदगी गुजार दो, या E3 क्लैड से दीवारों को हाईलाइट करके घर को संवार लो। ये अपना जहां है, दिल मिलते यहाँ है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Play to resume after drinks break. In the first 10 overs, they've got 96 on the board. Just 27 more needed. These two are really going well. Madhavan on strike was batting on 32. Captain on the other hand batting on 45. Missed out on putting this one away. There was no fielder on the onside at fine leg. Will just be a single of leg by. And Madhavan would be disappointed with himself that he couldn't put that one away for a 4 or a 6. But now, all the eyes on this man, Captain Tarun. Hasn't timed this one that well, but he'll pick up a single. That's in the air, but the fielder was inside the circle. That's going to be a boundary. 100 up over there with that boundary for Emerald Law Offices. Too short, easy picking for the batter Madhavan. And the fielder was inside the ring. So he went aerial over here. Oh, that's another quality shot from Madhavan. Back-to-back boundary. Superb batting from the stylish right-hand batter. Slogging this one towards the cow corner for 4 runs. That should be a wide. That was another poor delivery. This was a chance for Madhavan to fetch his third boundary. Just couldn't get the timing onto the bat. Indeed, he missed on hitting that one. A wide down the leg side.
That's gone in the air. Fielder settling underneath this one. He puts down the catch. Third life for Madhavan. He's riding on the luck today. Should have been taken quite easily. Another wide in the over. Captain one hit away from his half century. Is there a bat involved? No, it's a wide, and that is racing to the fence. So 5 runs of wides will be added to the total. This is really poor bowling. Too many deliveries down the leg side. $114 for 1. Runs needed in single digit now. That was really struck with a lot of power. The stumps came in between that shot. So, captain will pick up a single and is going to be on strike for the next over. 11 done. Score is 115 for 1. Eight more runs needed for a victory over here. Couple into his last over. 20 for 1 in his 3 overs. And that boundary should bring up the half century of the captain. What a knock this has been from Tarun. 4 more needed now for a victory. Well played, captain. 51 of 34 balls. 1 hit away from a victory now. And with this shot, the match should be over. And yes, he finishes the game in style with a 6. A victory by 9 wickets over here. What a shot down the ground by Captain Tarun. And he fetches a 9-wicket victory for his team over here. समझता है वार्डरोब की जिम्मेदारी, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। या तो कैबिनेट्स को वाइफ के गुस्से की भेंट चढ़ा दीजिए, या E3 यूरोपियन टेक्नोलॉजी वाले हिंजेस और चैनल से फर्नीचर की लाइफ बढ़ा दीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके रॉब को वार्डरोब भी तो संभाल के रखता है। फिर चाहे वॉच हो, वॉलेट, आपके पास दो, या वो जैकेट हो, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचाकर दूसरों से अलग बनाए। बॉयल गार्ड बॉल E3 HDMI फर्नीचर को लाइफस्टाइल के लिए वाटर और टर्माइट, तभी तो इसे मजबूत भी बनाता है, पानी और दीमक के असर से भी बचाता है। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। कभी किचन का चक्कर तो लगाइए जनाब, ये बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ प्लेट्स भी अपने से छोटों को आगे रखती है। अलग अलग स्वभाव वाले भी साथ में रहना सीख जाते हैं। आपकी मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए कुछ लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बनाओ। इसका हर हिस्सा कुछ सिखाता है। E3 प्रोडक्ट्स, E3 रिश्ता लंबा चलेगा, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
आगे आगे पीछे पीछे अरे उधर उधर किधर किधर उधर जल्दी हाँ नीचे लेफ्ट राइट करेक्ट करेक्ट आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। The three prizes today, fighter of the match is Karanveer. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। The game changer of the match is Vinay Sharma. आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। And the man of the match for today's E3 game is प्रोडक्ट्स, Madhavan ये रिश्ता लंबा चलेगा। Thank you. आपके पास